ओके आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था लास्ट टाइम। अब हम नेक्स्ट जाइए और 1.1 के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ये वही बुक है जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। तो जब हमने पहले बोला है कि हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो भी चैप्टर है उसका आपको कॉन्सेप्ट को पहले रीडिंग करना चाहिए। ओके, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। सो ऑलवेज do read every single word. In your earlier classes you have seen that any natural number can be written as a product of its prime factors. आपको याद है लास्ट क्लास में फैक्टर मेथड, for any number you can divide by 2 and then keep dividing. If not divide by 2 then divide by 3 and then 5 and 7. It is called prime factorization. अगर आप में से किसी को भी ये याद नहीं है then please go back and watch class 9 videos. Okay, all videos are there for concept videos. Watch class 9 videos अगर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी इसको में हो रही है करता। ओके, so now here's the theorem. For class 10 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट रहती है और कंप्लीट होता है। अब आप लेकिन इसको आपको एज इट इज याद करना होता है। वी विल मेक इट easy for you to learn. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors. If you read carefully each and every word, then you will understand it. So first you should know what is composite number. Then you should know what the meaning of factorization. Then you should know what is prime numbers. Prime numbers are also called as primes. And then the process of factorization and the meaning of unique. Unique means only one, none other than that this. So if 4 equal to 2 into 2, so only one set of factorization is there. Or 6 equal to 2 into 3, right? So 2 into 3. It's not like that ki one student came, if they are saying 2 into 3, then other group of students are saying 7 into 9. No, the factorization will be unique, only one set of factors apart from the order in which the prime factors occur. Order आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे for 6 2 into 3, instead of writing 2 into 3 you can write 3 into 2. यहाँ तक कोई लेट मी नो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है इस चीज में। No sir, no confusion. Okay, very good. Let's move to our study note. Okay, now I'm sharing our notice. Now let's start our class now with our
4. So what we say all the time, maths is, say with me, easy, but conditions apply. Conditions apply means you have to do practice regularly, regular practice. And the second thing is, you have to understand all the concepts. So math works like this: 1, 2, 3, 4. If you don't know concept number 3, you will not understand 4. So it's very important to learn each and everything. Let's read this theorem again. Every composite number can be expressed as product of primes. So now what you need to understand? Number one, you need to understand what is composite number. What is composite number? So someone can tell me composite numbers? So Yes, sir. May I? Go ahead. Bolo, bolo. So, sir, the number which can be divided by two or more numbers are called composite numbers. Yes. So for example, 6 equal to 2 into 3. It is composite number. Can be expressed as product of primes. Now we need to understand what is primes. And primes means prime number. Someone can tell me what is prime number? So any the number divided by 1 and itself. Yes, any number that can be divided by either 1 or the number itself, means there is no other factor. For example, 1, 2, 3, 5, 7, 9 is prime or not? No, 9 So is it is not prime. composite. 9 is divided by 3, 11, 13, 17, 19. This is called primes, prime number. So the theorem says, take any number in this world. You can take 100 or take any number. You can express it in terms of prime numbers. These are the prime numbers. So there will be 1, 2 into 5. So it may be the case कि 2 एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार आए, बट आएंगे ये प्राइम नंबर ही जब आप इसको फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट? अब इसको कैसे करेंगे? आप 100 लिया, राइट? We take it 100 and divide by 2, then it's 50. Sorry, not here. 2 5s are 10, then 0. Now it's 50. Okay, so you can divide 100 by 2 and the number will be 50. Again, you can divide 50. So keep dividing it. So how? Like this. Divide it, then it will be here 50. Then again divide by 2. Why we are dividing by 2 first? Because 2 is the smallest number. Then again it will be 25. Now you cannot divide by 2. If not divide by 2, then try with 3. If not divide by 3 possible, then go for 5. Here it's 5. 5. Okay, and then 5. What you will see here, 2 is 2 times and 5 is also 2 times. So if you multiply same number with more than 1 times, then we can write it in terms of power. So number is 2, but we are multiplying number 2 3 times. Then it can be written as like this: 2 to the power 3. Here 2 to the power 2
into 5 to the power. Exactly, it is stated in this theorem. Any composite number can be expressed or factorized in terms of primes or prime numbers, and this combination is unique. Unique means one student in Noida, one student in Delhi, and one student in America, England, they are dividing it. But when you will ask it, everyone will say the same thing, 2 to the power 2 and 5 to the power 2. It may possible someone is writing 5 to the power 2 first and 2 to the power 2 after that. So order may be different, but the number of primes will be the same, and it is called unique prime factorization of any composite. So as we were learning earlier in previous class, when we see any concept, first we should understand what, then we should understand how, and after that, automatically your mind will start questioning and you will master the concept. Here you should know what means, what is composite number, what is prime number, and then the theorem. You have to learn theorem as it is, and then how means how we can solve it, the method, and after that you will start understanding. So do it more than one time. Okay, if you can do it in 5 times, you are genius. ऐसे नहीं सोचना एक बार में समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो गया. Even in 5 times you are able to understand it thoroughly, you are a genius. So every composite number can be expressed, factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Ab bolo, any confusion with this theorem? No, sir. No, sir. Yeah, and what you need to do in each chapter, wherever you see there is a theorem, always write in your formula book, always, and try to remember it. After doing some practice, you will understand it. Abhi ho gaya. Now let's move to next concept. Last time we saw finding HCF of any two number by Euclid method. By Euclid method. Now you know HCF you can find in other way. HCF you can find HCF by prime factorization. Which method? Prime factorization. So you are doing it already. In your last class, you did it. So what you have to do? Take any number, say for example 30, do a prime factorization, start with 2, and then keep doing it until you get 1. This way you will get the factorization, prime factorization, 2 into 3 into 5. You have to find this HCF this way. So if there are two numbers, find the factors and then get the common factor. For example, now here it is 40. Okay. Do 40. You know it, right? If let me know if you don't understand any of these things. We are saying that you already know from your last class. If it is the case, you need to join your previous class session. Now these are the factors. So I can write 30 factorization like this. 2 into 3 into 5. Now I can write 40 here. 2, and then if not 2 available, then here 2 into 2. आप लोग ऐसे ही करते हैं ना सब लोग? अगर आप कुछ अलग करते हैं, let me know.
तो फिर क्या करना है आपको, जो पेयर बन जाएगा वही लेना होता है, किसमें, HCF। So HCF is 10. What is HCF? HCF is highest common factor. That means 30 के छोटे छोटे टुकड़े करो आप, और 40 के भी छोटे छोटे टुकड़े करो आप। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे 30 को जब आप टुकड़े कर रहे हो तो 1 टुकड़े करोगे तो 30 टुकड़े बनेंगे। अगर 2 के टुकड़े करोगे तो 15 बनेंगे, 3 के करोगे तो 10 बनेंगे। ऐसे ही करते चले जाओ। वो बड़े से बड़ा टुकड़ा आपको लेना है जो टुकड़ा 40 में भी यूज हो जाए। अब 40 के आप करोगे, 40 के भी कैसे करोगे आप, एक एक का भी पीस कर सकते हो आप। 2 पीस भी कर, 2 करोगे तो 20 पीस बनेंगे। 3 इससे तो होगा नहीं। 5 करोगे तो 8 पीस बनेंगे, राइट। तब आप देखोगे कि जो बड़े से बड़ा पीस बनता है वो 10 बनता है। आप 10 के पीस करोगे 30 के तो कितने पीस बनेंगे, 3 पूरे पूरे। और 10 के बनेंगे 4 पीस 40 का। तो HCF का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 30 एप्पल्स आर हियर एंड 40 एप्पल्स आर हियर। आपको वो बॉक्स का साइज निकालना है जिसमें हम अगर भरे ये वाले एप्पल और ये वाले एप्पल तो पूरे पूरे आ जाए। अगर आप एक बॉक्स में एक एक एप्पल रखोगे तो यहाँ 30 बॉक्स बनेंगे या 40 बॉक्स बनेंगे। अब 2 रखोगे तो 15 बनेंगे, 20 बनेंगे। ऐसे ही करते करते आप ये देखोगे, अगर आप एक बॉक्स में 10 एप्पल रख रहे हो, कितने रख रहे हो, 10, तब यहाँ पे 3 बन जाएंगे और यहाँ पे भी 10 रखोगे तो 4 बन जाएंगे। तो वो बड़े से बड़ा हाईएस्ट बॉक्स का साइज बनेगा, वही HCF होगा दोनों। तो अगर एक बॉक्स में हम 10 एप्पल रखेंगे तो वो इसको भी एडजस्ट कर लेगा और 40 को भी एडजस्ट कर, मीन्स 30 एप्पल को आप 10 में यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। और ये 10 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है। अगर आप 10 से आगे जाएंगे 15 20 तो होगा ही नहीं ऐसा। 20 करेंगे तो ये नहीं होगा, और 30 करेंगे तो फिर ये नहीं होगा, इस तरह से, राइट। दिस इज कॉल्ड HCF। अब LCM क्या होता है? LCM में आप क्या करते थे? LCM में आपको सिखाया गया था, जितने भी हैं सारे ले लो, 2 into 3 into 5 into 2 into, इट इज कॉल्ड LCM। अब LCM क्या होता है? इन LCM समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मतलब क्या है? अब हमने यहाँ पे लिखा 30 और यहाँ पे लिखा 40। अब हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसको 30 भी डिवाइड करेगा और 40 भी डिवाइड करेगा। जैसे 30 into 1 30 हो गया, 2 से करोगे 60 हो गया, 3 से करोगे 90 हो गया। ये सारे वो नंबर हैं जिनको 30 डिवाइड करता है। 40 के केस में क्या है? 40 होगा, 80 होगा, 120 होगा, फिर 160 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 120 होगा। अब ये कितना बना आपका? 120 बना, राइट। तो देखो आप, जब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, 30 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं नंबर से, तो 120 मिला, यहाँ पे 40 120 मिला। 120 वो नंबर है जो 30 से भी डिवाइड हो जाता है और 40 से डिवाइड हो जाता है। इसको लीस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके आगे और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे, आप बढ़ाते जाओगे तो 240 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 240 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। बट व्हाट वी नीड, मिनिमम, लीस्ट, this is LCM. Now you should know, if there are two numbers A and B, okay, then if we multiply two numbers, then it will be equals to HCF of two numbers and LCM of two. अगर HCF AB का और LCM AB का निकाल के मल्टीप्लाई करें, वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई के बराबर। वाई क्यों हो रहा है ऐसा? आप ध्यान से देखो,
जब हम HCF कर रहे थे तो हमने दो दो में से केवल एक एक लिया था, राइट? एक इसको छोड़ दिया था, किसको छोड़ दिया? अभी LCM में हमने किया, हमने सारे ले लिए, उसमें भी हमने एक एक पीस छोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखो, हमने LCM में सारे नंबर्स ले लिए, केवल पेयर वाले छोड़ दिए, और ये जो पेयर वाले मिला दे वही मिलके क्या बन जाता है? HCF। इसीलिए हम बोलते हैं if there are two numbers, A and B, the multiplication of two numbers is equivalent to multiplication of HCF and LCM of these two given numbers. कोई क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? Yes, sir. No question. Okay. So now I'm going back now. Let's go back because today is study class, right? Today we are understanding concept, not doing a lot of questions. So let me go back to your book again. Okay, it is called Fundamental Theorem of Arithmetic. Okay, and now coming back here, you must read this book, this chapter step by step. Okay, yeah. So this topic is very important. That's why we are covering it very slowly. Okay, one day we covered it, Euclid method to find HCF. Today we covered this theorem. So now we talked about it, right? The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. Now you should know natural numbers, right? So natural numbers means 1, 2, 3, 4. If you remember, last time we covered it in revision class. So if there is a number, for example, this, do a prime factorization, and then you can write it like this. That's what we just covered. So go at your home, just read it, what it is saying. Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether any value of n which 4 to the ends with a digit 0. 0 digit पोजीशन पे आएगा क्या? सोचो आप, किसी भी नंबर के एंड में 0 होता है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, एंड वो नंबर 5 से भी डिवाइड होता है, राइट? If the number is divisible by 5, that means the prime factorization of that number should include at least 1 5, right? At least 1. लेकिन 4 to the power n में क्या होगा? 5 कभी नहीं आएगा, because 4 is multiple of 2. So 4 to the power n means 2 to the power 2n. Think it, okay? कल think करके आना है आपको, and then let me know आपको क्या समझ में आया. सोचा करो, टाइम लगाना इसमें. Now find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization. ये आपको बता दिया था. दोनों का अलग अलग prime factorization करो, and then use the formula A into B equal to HCF into LCM. And now this is example 7. Same thing again. You have 4 things, A, B, 2 numbers, and 2 LCM HCF. If you don't know one thing out of 4, you can find it easily. अगर आपको एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत आता है इस टाइप के, then let us know. Then we will have, either you can join class 9 session, or we will have a one revision. And the recording of this session will be published, so you can watch it later on. As we discussed it earlier, अगर आप क्लास 10th में है, then you should watch all animated videos of class 9 and 10. You need class 9 to revise your concept and class 10 to understand new concept. आप वहां जाइए और होम लर्न्स चैनल पर आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हो. किसी को अगर दिक्कत हो रहा है नहीं फाइंड आउट करने में, तो हमें बोला. एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में है वो. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर बोथ स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. बट जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो बिल्कुल एक ही लैंग्वेज में है.
ओके, कल होमवर्क आप समझ गए, आप सारे एग्जाम्पल करिए एंड देन ट्राई टू डू एक्सरसाइज 1.2 एंड डोंट अफ्रेड ऑफ डूइंग रॉन्ग। ओके, गलत होने दो, कोई बात नहीं है। मैथ्स में कुछ भी गलत कर रहे हो आप, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। ओके, ये सोचेंगे कि मेरे को सही करना है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे कॉन्सेप्ट। आप गलत करिए, नहीं समझ में आ रहा है, देन शो अस इन दिस क्लास, लेट्स डिस्कस, फिर उसको सही करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो। और हम क्लास को इनको बहुत शॉर्ट रखते हैं कि हम, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे यहाँ पर। अब आप आराम से प्रैक्टिस करिए और देन धर्मवीर सर नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको, बट what, because you have holidays right in school, you have time, watch more and more concept videos, at least for maths and science, all videos. सर व्हाट इज द चैनल्स में? क्या कह रहे हैं आप? सर व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? अच्छा, चैनल नेम आपको अभी इस ग्रुप पे भेज देंगे, धर्मवीर सर जी आपको चैनल के ओके लिंक सर। भेज देंगे है ना ग्रुप पे। आपके पास ग्रुप मैसेज तो आ रहे होंगे ना आप? यस सर। हाँ, उसी में आ जाए। ओके देन, एंजॉय, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।